Hello guys, welcome back to Amos classes by V9430. In this video, we are going to understand the Python basic. It is a virtual Python on a Padroid 3 version of the Python app in which we can learn the Python, understand the Python codes, and do the Python coding in this. This is the Python ideal, it means interpreter which uh, gets the result by interpreting. लाइन बाय लाइन ये कोड्स को चेक करेगा, उनके रन कराएगा उनको और उसके बाद आंसर देगा. तो फर्स्ट कोड जो है हमारा प्रिंट hello. This is the basic code in which we can write in Python. This we run, then the answer come hello world, and again if we are here, then the cursor enter, and then we write print that you can write your name. I am writing my name. My name is Vishal Agnihotri, and then again we run the code. मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड रन करके इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज यू आर द बिगिनर ऑफ पाइथन. अगर हम चाहें तो इन सारे कोड्स को एक साथ करके एक साथ हम इनको रन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पाइथन ऐसी लैंग्वेज इसमें जो चाहे अपने मन से कर सकते हैं. सो देन द अनदर लाइन ऑफ कोड आई एम राइटिंग दैट इज ऑपरेटर मैनुअल which is the first unit of your Python in CBSE, and there is the code like we do 1 plus 1, then we run this program, then the answer we get 2. No, the answer we have 1 plus 1, so that is why it is getting because of we have written in double quotes. If we cut the double quotes, then the Python gives exact answer of the 1 plus 1, that is 2. You can see there the answer is 1 plus 1 is equal to 2. So this is the introductory video for Python developers, and this channel is going to start computer science 11th class, and अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको 11th की पूरी पाइथन सिखाने वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि पाइथन का यूज़ क्या. पाइथन में थ्योरी चैप्टर्स भी हम कवर करेंगे, बट थ्योरी चैप्टर्स आर नॉट वेरी marks gaining for you. That's why I start the Python second unit, which is the programming unit in which operators manual are there. So again we do print. अब क्या करते हैं, हम मॉडुलस लगाते हैं. तो 32, और मैं आपको बता दूं परसेंटेज के साइन को हम इसमें मॉडुलस बोलते हैं. तो मॉडुलस में जब हमने किया तो जो हमारा आंसर आएगा, वी सी द आंसर दैट इज 2. तो आंसर जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर आएगा, बिकॉज मॉडुलस में जो आंसर रिमाइंडर होगा हमारा, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा रिमाइंड जो है आंसर बनेगा. अगेन वी गो. अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो लाइक मैं करता हूँ 3 माइनस 3, प्रिंट करते हैं आंसर 0. That is the Python code. And if you want to download, you can download Padroid 3 from App Store and from Play Store also. In Apple, we have also Python, and in
Android we have also. If you have your system you can get on it, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल पे भी कोडिंग कर सकते हैं, just like I am doing. So another than I am going to say that this Python is a basic Python, not advanced Python. Advanced Python is going to be done in further studies in higher education, like in BTech in CS, BTech in electrical, BTech in coding, anything. So this Python program works on the interpreting language. We have many high level languages like C++, Java, but C++, Java have the many types of codes and many written form. Python is the simplest and very easy language for the students who are studying CS in their 11th optional subject. So आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. टुडेज एंड देयर एंड हमारा प्रोग्राम फिनिश्ड हो चुका है. इसके आगे भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं. और मैं आपको अभी आर्ग्यूमेंट सिखाऊंगा, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट सिखाऊंगा, बिट फॉर्म सिखाऊंगा. बिट फॉर्म हमारे 11th-12th के सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, बट बिट इज़ नेसेसरी ऑल्सो. Okay, thank you, and thank you for watching. Keep watching Amos classes for the videos of computer science.